हाय गाइस। सो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूँ, जिसमें इफ़ यू वांट टू सेंड अ लेटर, ये जैसे मेरे एक्सेल में डेटाबेस है एंड आई वांट टू सेंड, ये एक वर्ड का लेटर है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट। इफ आई वांट टू सेंड टू पर्टिकुलर फैकल्टी, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है इन माय कॉलेज में भी, सपोज आई हैव मेनी डिपार्टमेंट्स एंड आई वांट टू सेंड ओनली इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज को ही ये लेटर भेजना है स्टिल, सो दैट आई कैन यूज अ फिल्टर। बट इवन इन दैट ऑल्सो इफ आई वांट कि वो फुल टाइम यस है तो ही उनको भेजना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द लोग फिल्टर करेंगे, ऐसे इकोनॉमिक्स सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें भी अगर यस है तो सिर्फ यहाँ पे यस करेंगे एंड फिर ये डेटा को कॉपी करेंगे एंड फिर उसको इंडिविजुअल कॉपी पेस्ट करेंगे। उससे भी बेटर ऑप्शन है, देयर इज अ मेल मर्ज इन वर्ड। एंड ये जो यहाँ पे फिल्टर किया है, आई कैन यूज सेम फिल्टर इन मेल मर्ज ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। आज हम लोग ये डेटा यूज करेंगे इन द वर्ड with the help of mail merge for this later. So it is very simple step is mailing. Go to start mail merge step by step. यहाँ पे आपको दिया गया है यू कैन चूज अ लेटर। सो यहाँ पे आपको सिर्फ करना है नेक्स्ट, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, यस आई वांट टू यूज दिस करंट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट। यहाँ पे यू हैव एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर आपके पास पहले से एड्रेस है यू कैन टाइप अ न्यू लिस्ट ऑल्सो, बट राइट नाउ व्हेन आई एम हैविंग अ एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ मे बी एक्सेल फाइल हो सकता है, एक्सेस फाइल हो सकता है, आउटलुक फाइल होता है, एनी फाइल यू कैन यूज बाय क्लिकिंग ऑन ब्राउज, देन आई कैन यूज माई फाइल। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड फिर वापस ब्राउज करता हूँ फ्रॉम डी ड्राइव, आईसीटी फोल्डर। ओके, नाउ जैसे हम लोग एक्सेल में फिल्टर कर रहे थे, यहां पे भी सेम वे वी कैन डू फिल्टर बाय दिस वे। सो जैसे मुझे, इफ आई वांट अ डिपार्टमेंट और मे बी फैकल्टी, ऐसे इकोनॉमिक्स। सो नाउ यू कैन सी आउट ऑफ दिस सिर्फ मेरे पास इकोनॉमिक्स वाले फैकल्टी का ही डेटा रहेगा। नाउ सेकंड फिल्टर, फुल टाइम, इफ आई वांट -1, सो अगेन गो टू यहाँ पे फुल टाइम equal to, you can use, there are many conditions like less than, equal to, not blank। so अभी मैं equal to चेक करता हूँ, अगर -1 आएगा तो ओके। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे से जो जीरो था वो भी हट गया एंड यहाँ पे ओनली इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले हैं। सो नाउ विच एवर फील्ड नाउ आई वॉन्ट टू इंसर्ट, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट। जैसे मुझे यहाँ से क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, स्पेस, फैमिली नेम चाहिए, आई कैन यूज दिस फील्ड अगेन एंड अगेन वेर एवर आई वॉन्ट। जैसे यहाँ पे मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए, और मे बी इफ आई वॉन्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट, तो आई कैन प्लेस माई कर्सर ओवर दैट, और फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट से है, फिर उसके बाजू में उनका टेलीफोन नंबर चाहिए। सो आई कैन यूज एन नंबर ऑफ फील्ड फ्रॉम दिस एज पर माई विश। जैसे सेम वे, अगर इफ आई वॉन्ट टू री यूज द सेम फील्ड, dear first name, I can use that. So now mail merge is a combination of two files. One is later and second one is your database. That is जो अभी हम लोगों ने CSV फाइल या Excel का कोई फाइल, if we want to use that. So after doing all this stuff, आपको just check करना है preview. So you can see यहाँ पे, but यहाँ पे आप देखोगे तो only one letter आ रहा है, but there are n number of letter over there. So you have to do this step, finish, edit individual, all, okay. So basically this is your main file. तो आप now you can see this is with economics department and यहाँ पे वो individual नाम भी आपको on separate pages. So now you can save this file
and you can take print out of this file. Hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. For more video like this, you can subscribe to my channel. There are different advanced MS Office, advanced Excel, Corel Draw. There are n number of different learnings, so you can learn from that.